गुड इवनिंग एवरीवन शुभ संध्या मु अम्लान अंशुमत साहू एम्स भुवनेश्वर एमबीबीएस छात्र आज हम गोटे नुआ चैप्टर स्टार्ट करबा हमर नीट रो बायोलॉजी प्रिपरेशन पई हमें जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और सॉल्यूशन करछे सेतना आज हम गोटे न्यू चैप्टर स्टार्ट करबा एडा होचे हमर क्लास 11th बायोलॉजी रो चैप्टर नंबर 21 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ओके तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो अछि सेटा हमर ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट अंडर रे आसे एटा बहुत बड़ा चैप्टर नुहे और एथिरो मैक्सिमम तुमको 1 या 2 क्वेश्चंस नीट रे तुम एक्सपेक्ट करि परिबो ओके तो लेट्स स्टार्ट तो मु एठे एनसीईआरटी रो एग्जाम्पलर रो पीडीएफ ओपन करछि और साइड बाय साइड एनसीईआरटी रो पीडीएफ भी ओपन करछि जो द्वारा हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर रो तो सॉल्यूशंस करबा और जो सॉल्यूशन बा जो क्वेश्चन हम करछे सेही पोर्शन टा हम साइड बाय साइड एनसीईआरटी रो रिवाइज भी करने ओके तो हमरो डबल लेयर रे प्रिपरेशन हे जिवो ओके तो स्टार्ट करबा फर्स्ट क्वेश्चन देखो chemicals which are released at the synaptic junction are called तो से कहूँ कि सिनाप्टिक जंक्शन रे किछि केमिकल्स माने रिलीज होचंदी से केमिकल्स माने को कोन कहा जाय ओके सिंपल बहुत एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन एटा से कहूँ कि सिनाप्टिक जंक्शन रे किछि केमिकल रिलीज होंती से केमिकल माने को कोन कहा जाय सिनाप्टिक जंक्शन कोन सिनाप्टिक जंक्शन होची गोटे प्री सिनाप्टिक न्यूरॉन और गोटे पोस्ट सिनाप्टिक न्यूरॉन मझे जो गैप थाए बा जंक्शन थाए सेटा को कहा जाय सिनाप्टिक जंक्शन बा सिनाप्टिक क्लेफ्ट ओके तो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन कौन प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन होची से न्यूरॉन जो थ्रू रे इंपल्स ऑलरेडी एबे ट्रांसमिट हे सारची जार फ्रॉम द डेंड्राइट टुवर्ड्स द एक्सॉन ऑलरेडी इंपल्स जो अछि सेरा ट्रांसमिट हे सारची ओके तो इंपल्स टा एबे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन रा एक्सॉन जो अछि ना एक्सॉन कोड था एक्सॉन टा तार सेल बॉडी पर हमर एक्सॉन आसे तो एक्सॉन रा एंडिंग रे ऑलरेडी से प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन रा इंपल्स टा पहुंची सारची ओके तो इंपल्स ऑलरेडी एबे प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन रो माने सिनाप्स रो पूर्व जो न्यूरॉन आसे से न्यूरॉन रो एक्सोनल एंडिंग रे पहुंची सारछ ओके और एक्सोनल एंडिंग रे पहुंची कि से किछि जतेबे से सिनाप्स टा माने जतेबे से इंपल्स टा हमरो प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन रो देखो एक्सोन टर्मिनल रो बा एक्सोनल एंडिंग रे पहुंचीबो से टाइम रे चेंज इन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हमर जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स माने एई एक्सोनल एंडिंग रो मेम्ब्रेन ऊपर प्रेजेंट केबे voltage gated calcium channels okay voltage gated calcium channel माने electrical activity बा membrane potential change हेबा जोगु depolarization होबो okay membrane रो depolarization होबो obviously जेतेबेले impulse टा हमें already impulse transmission एई चैप्टर रे ए पर्सन रे पढी सारछ okay এই পোর্শন রে আমি অলরেডি দেখো এই পোর্শন রে আমি অলরেডি ক্লিয়ারলি ইম্পলস ট্রান্সমিশন বিষয়ে পড়ি সারছি কো বড়িয়া ইম্পলস ট্রান্সমিশন हुए कि बड़ी धीरे धीरे वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स माने ओपन होवा जोगु इम्पल्स टा अलोंग द एक्सॉन कंडक्ट हुए सेटा हम ऑलरेडी पढ़ी सारछे तो सेम वे रे जत्ते इम्पल्स टा कंडक्ट हे कि एई मैनर रे कंडक्ट हे कि एक्सॉन रे एंडिंग रे पहुंचबो तो एक्सोनल एंडिंग रे जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स माने थिबे तो एक्सॉन एंडिंग रे जो मेम्ब्रेन अछि मेम्ब्रेन टा डीपोलराइज्ड हो ओके तो एक्सोनल एंडिंग रे जो मेम्ब्रेन अछि सेटा डीपोलराइज्ड हो सेटा डीपोलराइज हेले ए एक्सोनल एंडिंग ऑफ जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स में जो अछि से माने ओपन कर दियो से माने ओपन करले कैल्शियम रो एंट्री हबो ए भितरे कैल्शियम जतले भितरे एंट्री करिवो से कोन हमर एक्सोनल एंडिंग बा एक्सॉन टर्मिनल रे कोन था हमर जो एक्सोनल नॉब थाए ओके एक्सॉन टर्मिनल रे हमर जो सिनेप्टिक नॉब्स माने प्रेजेंट थांदे ओके तो देखो एटा जदी हमर डायग्राम ऑफ अ न्यूरॉन कोटे से देखो देखो एटा होचे हमर न्यूरॉन रो डायग्राम एटा होचे हमर टिपिकल न्यूरॉन रो डायग्राम स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन तो एठी हम देखुचे एई जो स्ट्रक्चर टा अछि सेंटर रे एटा होचे हमर एक्सॉन ओके तो एटा हमर गोटे माइलिनेटेड न्यूरॉन बिकॉज़ इट इज सोन सेंस माने माइलिन शेथ प्रोड्यूस करि चंती ओके माइलिन शेथ प्रेजेंट अछि तो एटा हमर माइलिनेटेड न्यूरॉन और एटा होचे हमर एक्सॉन टर्मिनल बा एक्सॉन एंडिंग जोटे एक्सॉन रो ब्रांचिंग हुए ओके एक्सॉन जोटे ब्रांचिंग करे सेटा हमर एक्सॉन टर्मिनल बा एक्सॉन एंडिंग होला तो एक्सॉन एंडिंग रे कोन एक्सोनल एंडिंग रे एटा सपोज हमरा एक्सॉन एटा एक्सॉन हमरा ब्रांचिंग करला टर्मिनल पोर्शन रे तार जो एंडिंग था सेठी हम गोटे सोलन पोर्शन था गोटे सोलन पोर्शन और से सोलन पोर्शन टा को सिनेप्टिक नॉब कहै से सोलन पोर्शन टा को सिनेप्टिक नॉब कहै ओके से सोलन पोर्शन टा को सिनेप्टिक नॉब काहे की कहै जाय बिकॉज़ सेटा सिनाप्स रो जस्ट पूर्वरु थाए तो सिनाप्स रिलेटेड जहाँ भी जिनस अछि सेटा को सिनेप्टिक टर्म यूज करा जाय ओके और से सिनेप्टिक नॉब भीतर कोन थाए सिनेप्टिक नॉब भीतर किछि वेसिकल्स माने प्रेजेंट थांदी ओके देखो एटी सिनेप्टिक नॉब रो हां एटा देखो एटा अछि हमर एक्सॉन टर्मिनल ओके एटा हमर एक्सॉन रे एटा होछि हमर सिनेप्टिक नॉब ओके
सिनाप्टिक नॉब को एनलार्ज करके देखा जायछि क्रॉस सेक्शन ने सिनाप्टिक नॉब तो सिनाप्टिक नॉब रे कोन थे वेसिकल्स मन पेट लिखा छै सिनाप्टिक वेसिकल्स ओके सिनाप्टिक नॉब भितर कि सिनाप्टिक वेसिकल्स थांदी और सिनाप्टिक वेसिकल्स मन भितर कोन थाए गोटे केमिकल थाए जोटा को न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाए ओके न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाए तो ए वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल थ्रू रे जेतबे कैल्शियम हमर सिनाप्टिक नॉब भितर एंट्री करिवो सेतबे से कैल्शियम कोन करिवो कैल्शियम वेसिकल्स मानन को प्रोपेल करिवो टू मूव टुवर्ड्स द एक्सटर्नल एंडिंग रो जो आउटर मेम्ब्रेन अछि जोटा हमरो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन रो जोटा हमरो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन रो कांटेक्ट रे अछि ओके प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एटा सिनाप्स रो पूर्व रो अछि बिकॉज़ एइदर सेटा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन फॉर्म करा है थाई पारे अदरवाइज सेटा जस्ट गोटे सिनाप्स थाई पारे आउ एई एक्सन परे एटा जेमति एक पिक्चर टा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ला दिया बिकॉज़ एटा हमरो मस्कुलर जंक्शन टा ओके एटा न्यूरॉन एटा मसल तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बट अदर केसेस रा आउ केमिति सिनाप्स इवर तो सिनाप्स कोन सिनाप्स और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिफरेंट थिंग ओके तो एटी जेमति हमरो एक्सन अछि एटा हमरो एक्सन एंडिंग गुडी को आसिले ओके एक्सन एंडिंग रे हमरो सिनेप्टिक नॉब देखा जाउची तो एठी जदी हमरो आउ गोटे एई भलिया डेंड्राइट प्रोड्यूस है कि आउ गोटे न्यूरॉन एठी हमरो प्रोड्यूस थिवो देन एटा को कहा जाय हमरो सिनाप्स ओके एटा हला हमरो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एटा होछि हमरो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन ओके प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन तो एठी जो हमरो एक्सन सिनेप्टिक नॉब अछि जो भीतर सिनेप्टिक वेसिकल्स माने न्यूरोट्रांसमीटर कंटेन करी रखछनी सेई सिनेप्टिक वेसिकल्स मनरो मूवमेंट कॉज करेबो जो कैल्शियम एंटर करला राइट कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स रो एंटर करला से सिनेप्टिक वेसिकल्स मनरो मूवमेंट कॉज करेबो टुवर्ड्स दिस एंडिंग टुवर्ड्स द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और टुवर्ड्स दिस सिनेप्टिक क्लेफ्ट ओके ये जो गैप था ना सिनेप्स रो से गैप लो कहा जाय सिनेप्टिक क्लेफ्ट तो फाइनल जितने से माने ए वेसिकल्स माने आसीकी ए मेम्ब्रेन सहित फ्यूज करिवो ओके कैल्शियम चैनल कोन करिवो कैल्शियम आयन एमानकर मूवमेंट कॉज करेबो और एमानकर फ्यूजन कॉज करेबो विद द मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सॉन टर्मिनल तो एमाने आसी मेम्ब्रेन सहित ए बडा फ्यूज कर जिवो ए बडा फ्यूज करले एट कोन हे जिवो ओपनिंग क्रिएट हे जिवो गोटे बस स्लिट क्रिएट हे जिवो तो से वेसिकल्स सहित जहां भी केमिकल व न्यूरोट्रांसमीटर्स माने प्रेजेंट अछनी से माने से सिनेप्स रे रिलीज हे जिवे हमको हम क्वेश्चन आंसर मिलगला केमिकल्स व्हिच आर रिलीज्ड एट द सिनेप्टिक जंक्शन आर नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर्स ओके क्लियरली आंसर लिखाई छै एठी देखो एठी क्लियर लिखाई छै कि एट अ केमिकल सिनेप्स गोटे केमिकल सिनेप्स द मेम्ब्रेन्स ऑफ द प्री एंड द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स आर सेपरेटेड बाय अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट ओके एठी क्लियरली स्टेटमेंट दिया जैसे देखो गोटे केमिकल सिनेप्स कोन केमिकल सिनेप्स जो सिनेप्स रे conduction of electrical activity by conduction of impulse undergoes by a chemical process or by the release of a chemical known as neurotransmitter okay तो chemical synapse रे जो membrane अछि हमरो प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन रो से माने सेपरेटेड थांदी गोटे फ्लूइड फील्ड स्पेस द्वारा से फ्लूइड फील्ड स्पेस को सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहा जाय okay तो chemicals called neurotransmitters are involved in the transmission of impulses at the synapses okay clearly एटा हमर आंसर मिल गला कि केमिकल सिनेप्सिस रे किछि केमिकल्स माने इन्वॉल्व हेतानी कॉल्ड और समान कोन कहा जाय समान को कहा जाय न्यूरोट्रांसमीटर्स ओके न्यूरोट्रांसमीटर्स नारो किछि केमिकल माने ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स रे इन्वॉल्व होंती एट दिस केमिकल सिनेप्सिस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जवा potential difference across the resting membrane is negative this is due to the differential distribution of the following ions clearly एटा भी हमर बहुत सिंपल क्वेश्चन से कहछि कि गोटे रेस्टिंग जदि गोटे न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेज रे अछि तो तारो मेम्ब्रेन अक्रॉस रे जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो सेटा को रेस्टिंग पोटेंशियल कह जाय ओके देखो पे लिखा छै द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज रेस्टिंग पोटेंशियल तो रेस्टिंग पोटेंशियल दा डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ को डेटा आयन जगो क्रिएट होय देखो it clearly लिखा है these ion channels देखो when a neuron is not conducting any impulse that is resting okay resting रो मीनिंग कोन जतले न्यूरॉन कोनोसी impulse conduct करूनी माने से रेस्टिंग स्टेज रे छै और रेस्टिंग स्टेज रे जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुए हमरा अक्रॉस द एक्सटर्नल मेम्ब्रेन सेटा को जे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ओके तो सेटा लिखा छै जते बडे गोटे न्यूरॉन कोनोसी impulse conduct करूनी that is resting stage रे अछि तो सही केस रे जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन अछि ना से एक्सटर्नल मेम्ब्रेन टा comparatively more permeable to potassium and nearly impermeable to sodium अब ओके
तो रेस्टिंग स्टेज रे कौन हम रेस्टिंग स्टेज रे जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन थी से पोटेशियम आयंस प्रति मोर परमिएबल हम और नियरली इम्परमिएबल हम हमर विथ रेस्पेक्ट टू सोडियम आयंस। तो एठो हमर क्वेश्चन आंसर मिलिगला कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन अक्रॉस से रेस्टिंग स्टेट रे ओके रेस्टिंग स्टेट रे एक्सटर्नल मेम्ब्रेन अक्रॉस से जो पोटेंशियल डिफरेंस थाए सेटा नेगेटिव थाए। ओके पोटेंशियल डिफरेंस जोटा हमर एक्सटर्नल मेम्ब्रेन अक्रॉस रेस्टिंग स्टेज रे थाए बा जो टाइम रे कोनोसी इंपल्स कंडक्ट करूनी से न्यूरॉन से टाइम रे सेटा को रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बा आरएमपी कहा जाए। ओके आरएमपी बा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहा जाए और सेटा नेगेटिव थाए रेस्टिंग स्टेज रे एंड दिस इज ड्यू टू द डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हिच आयंस। अब ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल टा नेगेटिव हुए ड्यू टू द डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हिच टू आयंस। हमको हमर आंसर ऑलरेडी मिल जायछि सोडियम एंड पोटेशियम आयंस। ओके सोडियम पोटेशियम आयंस को प्रति से परमिएबल था बट सोडियम आयंस को प्रति से नियरली इम्परमिएबल था। तो हमारा आंसर है वाला Na+ एंड K+। ओके तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन टा हमरो रेस्टिंग मेम्ब्रेन के से सोडियम और पोटेशियम आयंस को डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जगो नेगेटिव आरएमपी प्रोड्यूस होता है इन द रेस्टिंग स्टेज। ओके तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन is called as the resting potential across the resting plasma membrane is known as resting potential। okay it is जदि हम क्लियरली प्रोसेस टा भी पढ़िबा तो ऑलरेडी हम ए प्रोसेस पढ़ी सारछे कि exoplasm inside the axon contains high concentration of K plus and negatively charged protein concentration of it clearly लिखा है। in contrast हमर जो एक्सोप्लाज्म अछि ओके हमर एक्सोप्लाज्म जो अछि जोटा हमर एक्सॉन भितरे प्रोटोप्लाज्म पे एक्ट करे से एक्सोप्लाज्म टा इनसाइड द एक्सॉन कोन रखित है साइड द एक्सॉन हमको हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन देखा मिले और नेगेटिव चार्ज प्रोटीन देखा मिले वेरएस आउटसाइड ओके आउटसाइड हमको लो कंसंट्रेशन ऑफ K प्लस एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस देखा मिले जो को हमर डबल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हुए। ओके डबल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कौन डबल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट माने गोटे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड K प्लस आयंस मानक पई अछि आ गोटे फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड Na प्लस आयंस मानक पई अछि। ओके तो जो एक्सोप्लाज्म अछि माने हमरो एक्सॉन भीतर प्रोटोप्लाज्म सेटा हाई कंसंट्रेशन ऑफ K प्लस कंटेन करे और हाई कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन बट लो कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस वेरएस जो आउटसाइड फ्लूइड टा हमर अछि बा ECF बा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सेथरे हमरो लो कंसंट्रेशन ऑफ K प्लस थाए। ओके लो कंसंट्रेशन ऑफ K प्लस थाए एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस थाए जो हमरो गोटे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो सेटा ही हमरो क्वेश्चन थिला आ कि डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कौन डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन माने गोटे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रेजेंट थिबा दरकार। ओके डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन माने अलग अलग कंसंट्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन हेची भीतर K प्लस अधिक अछि बाहर कम अछि बाहर Na प्लस अधिक अछि भीतर कम अछि सेटा कोई डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कहबा तो Na प्लस और K प्लस डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंट है। नेक्स्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन्ड बाय ए जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अछि सेटा गोटे हमरो रेस्टिंग स्टेट रे जते बेले गोटे एक्सॉन जते बेले बा न्यूरॉन जते बेले रेस्टिंग स्टेज रे अछि से कोनोसी इंपल्स कंडक्ट करूनी सेही टाइम रे भी हमें एटे ऑलरेडी पढ़िले कि जो हमर एक्सटर्नल मेम्ब्रेन था से परमिएबल टू K प्लस तो K प्लस आपे आप बाहर को चली जीवो। ओके बट इम्परमिएबल टू Na प्लस था तो जदि K प्लस बाहर को चली जीवो फ्रॉम इनसाइड ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल टा डिस्टर्ब हो बिकॉज़ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन है कि रहा जनरली और से नेगेटिव था तो मेंटेन एक रखिया पे हमको कोई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को भी मेंटेन करके रखिया पड़ियो माने एमितिया किछि गोटे जिंस दरकार जोटा कांस्टेंटली K प्लस को K प्लस जो छै K प्लस आयंस को भीतर को प्रोफाइल करेबो और जो Na प्लस आयंस माने असली सेवन को भीतर बाहर को छाड़ी तो ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जतर जे मेंटेन करबो ऑब्वियसली हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी मेंटेन हे बोला रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल केतबे मेंटेन हे रहबो जतबे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन हे रहबो तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करिया पे हमको बाहर Na प्लस रा हाई कंसंट्रेशन मेंटेन करिया अछि और भीतर K प्लस रा हाई कंसंट्रेशन मेंटेन करिया अछि माने हमको एमितिया किछि गोटे स्ट्रक्चर दरकार जोटा हमर एक्सटर्नल मेम्ब्रेन ऊपर प्रेजेंट रहइबो और से हमर Na प्लस को फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड कंटीन्यूअसली पंप करिवो और K प्लस को फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड कंटीन्यूअसली पंप करिवो तो पंप वर्ड मु ऑलरेडी यूज कर सालिनी तो हमरा आंसर ऑब्वियसली आयन पंप हो बट एटा आउट क्लियरली देखियो देखो these ion gradients across the resting membrane are maintained। देखो हमरो नेक्स्ट क्वेश्चन रा आंसर भी एठी कंटीन्यूअस एठी ही अछि देखो केते इजी
These ionic gradients across the resting membrane are maintained by the active transport of ions by the sodium potassium pump, which transports 3Na plus outwards for 2K plus into the cell. Okay, as a result, जो हमारा outer surface of the axonal membrane है, ये ଗୋଟେ positive charge he possesses କରିକି ରଖେ ଆଉ inner surface ଟା becomes negatively charged and therefore it is known as the polarized state. Okay, तो resting membrane potential को polarized state कुहा जाए. Okay, तो जेतेबेले resting membrane potential हमरा present था across the axonal membrane से state टा को polarized state कुहा जाए because हमरा outside टा positively charged था और inside टा negatively charged था. काहे कि because हमर गोटे pump अछि. Okay, से पंप रो ना कोन से पंप रो नेम होछि हमरो सोडियम पोटेशियम पंप. ओके, से पंप रो नेम होछि सोडियम पोटेशियम पंप. सोडियम पोटेशियम पंप रो फंक्शन कोन सी एटीपी यूज करिवो. ओके, सोडियम पोटेशियम पंप यूजेस एटीपी. ओके, फॉर 1 एटीपी. ओके, फॉर 1 एटीपी गोटे एटीपी कंज्यूम करके से केते कोन फंक्शन करे से तीनटा Na+ को आउटवर्ड्स एक्सपेल करे माने से efflux of 3Na+ cause कराए और influx of 2K+ cause कराए. ओके, दीटा K+ आयन को into the cell से influx कराए और तीनटा Na+ को from the exoplasm to the extracellular fluid से efflux कराए गोटे एटीपी कंज्यूम करके. तो जेहेतु से गोटे पंप सी गोटे आयोनिक पंप आउ सी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फंक्शन करछि. अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट केमिति फंक्शन करछि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिकॉज ऑब्वियसली हमर भीतर ऑलरेडी K+ कम अछि और बाहर सॉरी K+ अधिक अछि और बाहर हमर कम अछि बट स्टिल हमें K+ को फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट करोचे डेटा K+ आयन को. तो एटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट हला. हमें ऑलरेडी जानछे कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जेतेबेले हमें कोनोसी जिंस को अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करेबा त हमको एनर्जी रिक्वायरमेंट हबा सेटा पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट को जाए और सेट पे कि हमको किछ स्पेसिफिक आयन पंप्स बा प्रोटीन पंप्स दरकार पड़िबो. ए सब हम ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर रे पढ़ी सारी छे राइट. तो सेति पय हमको एई प्रोटीन पंप जार नाम होची सोडियम पोटेशियम पंप सेडा दरकार जोटा 1 एटीपी यूज करिकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट करोची तीनटा Na+ को आउटवर्ड्स और 2K+ को into the cell. ओके, तो एई जो ट्रांसपोर्ट जो हमरो जो आयोनिक ग्रेडियंट्स अछि. ओके, आयोनिक ग्रेडियंट्स बा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अछि अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन सेटा मेंटेन हेगी रोज. ऑब्वियसली जदि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन हेगी रहइबो तो सिंपली हमर ऑब्वियसली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी मेंटेन हेगी रहइबो. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल काहे की प्रेजेंट है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रो कॉज होची हमरो डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Na+ आयंस एंड K+ आयंस. पूर्व क्वेश्चन रे हमें देखि Na+ और K+ रो डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जगु ही ए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल टा हमरो प्रेजेंट है अक्रॉस द एक्सटर्नल मेम्ब्रेन जेतेबेले न्यूरॉन टा कोनोसी भी इंपल्स ट्रांसमिट करू नाही. ओके, तो ए डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन टा ही हमको मेंटेन करिक रखार अछि सिंपली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करबा पई डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को मेंटेन करिक रखा पई ए पंप अछि. ओके, तो आयोनिक ग्रेडियंट हमरो मेंटेन हेकी रहउछि. तो एज अ रिजल्ट जो हमर आउटर सरफेस अछि आउटर सरफेस टा कांस्टेंटली हमरो पॉजिटिव चार्ज कैरी करूछि because of the presence of high concentration of Na+ और हमर जो इनर सरफेस अछि इनर सरफेस टा हमरो नेगेटिवली चार्ज रहउछि because of the presence of negatively charged proteins. Okay, और therefore a state टा को polarized state कहा जाए because of separation of charges. Separation of charges को polarized state कहा जाए. Outer membrane positive, inner membrane negative. Okay, this is known as polarized state. Depolarized state केतेबेले कहबो जेतेबेले reversal of charge है जो इनर मेम्ब्रेन टा जेतेबेले पॉजिटिव हे जिवो और आउटर मेम्ब्रेन टा नेगेटिव हे जिवो सेरा कहबो जिवो डीपोलराइज्ड चार्ज. डीपोलराइजेशन केबे हबो जेतेबेले एक्सॉन एंडिंग रे माने जेतेबेले हमरो गोटे इंपल्स आसीबो हमरो एक्सॉन रे रीच करिवो सेही टाइम रे हमरो डीपोलराइजेशन स्टार्ट हबो. धीरे धीरे अलोंग द एक्सॉन से इंपल्स टा जेमे जेमे ट्रांसमिट करिवो हमरो डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन हे जिवो अक्रॉस द एक्सॉन. ए प्रोसेस को ऑलरेडी पढ़ी सारछे. ओके, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमरा आयन पंप मेंटेन करछ. नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ आवर विसरल ऑर्गन्स इज कंट्रोल्ड बाय. विसरल ऑर्गन्स मानकर फंक्शन को को नर्वस सिस्टम रो को पार्ट हमरा कंट्रोल करूछि. ओके, तो देखो एठी क्लियरली हमरा अछि जस्ट गोटे क्विक रिवीजन कर देबा केमिति क्लासिफिकेशन है हमरा ह्यूमन न्यूरल सिस्टम बा नर्वस सिस्टम रो. तो जो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम अछि ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को हमें
broadly two parts रे divide करि परिबा central neural system और peripheral neural system okay central neural system रे only दीटा part थाए हमरो brain थाए और spinal cord थाए okay central neural system रे only हमरो brain और spinal cord होचंदी constituents and it is the site of information processing and control okay तो central nervous system रे सब प्रकार information जहाँ हमरो थाए से सब रो processing होए और ओवरऑल कंट्रोल जो अच्छे हमारा सब बॉडीली फंक्शन रा सेटा हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम करे नेक्स्ट हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अच्छे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी व्हिच इज एसोसिएटेड विद द सीएनएस तो सीएनएस ने हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड रहला जोठे हमारा सब इंफॉर्मेशन प्रोसेस होए और सब प्रकार जते फंक्शन अच्छे सब रो कंट्रोल होए whereas peripheral nervous system रे कोन अछि peripheral nervous system सब nerves को include करछि जते भी हमरा nerves माने अछि ओके सेटा चाहे cranial nerves हो सेटा spinal nerves हो सेटा हमरा interneuron हो relay neuron जोटा interneuron को आजे sensory सेटा nerves अछि motor nerves समस्त हमरा peripheral nervous system रे आसी माने anything that is made up of neurons that is not brain and spinal cord okay as simple as that स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन छाड़ी की जितने भी हमारा नर्वस सिस्टम रो पार्ट अछि सब हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अंडर रे आसी ओके तो ए जो नर्व फाइबर्स माने हमारा अछंदी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऑब्वियसली कंसिस्ट ऑफ द नर्व फाइबर्स ए जो नर्व फाइबर्स माने टू टाइप्स रो ओके एदर से माने एफरेंट फाइबर्स ही परंती और इफरेंट फाइबर्स ही परंती एफरेंट फाइबर्स और इफरेंट फाइबर्स होछने हमारा टू टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स जोटा हमारा पीएनएस रे प्रेजेंट अछंदी जोटा हम ऑलरेडी तुमको कहि देली एफरेंट फाइबर्स को कौन कहा जाए एफरेंट फाइबर्स को अदरवाइज सेंसरी न्यूरॉन्स कहा जाए इफरेंट फाइबर्स को अदरवाइज मोटर न्यूरॉन्स कहा जाए मोटर नर्व फाइबर्स कहा जाए तो सेंसरी नर्व फाइबर्स माने फंक्शन और मोटर मानकर फंक्शन हम ऑलरेडी जानी छे कि जो एफरेंट नर्व फाइबर्स बा सेंसरी फाइबर्स थांती से माने फ्रॉम द टिश्यू और द ऑर्गन माने फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स ओके और सेंसरी जो हमारा सेंसर कहा जाए ओके सेंस ऑर्गन्स अदरवाइज एटा को सेंसर कहा जाए सेंसर रु इंपल्स जो हमरा फ्रॉम द एनवायरनमेंट हमारा सेंसर माने किछि चेंजेस को डिटेक्ट करिवे डिटेक्ट करके इंपल्स जनरेट करिवे सेही इंपल्स गुडी को फ्रॉम द सेंसर और सेंसरी ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ट्रांसमिट करिवार फंक्शन अछि एफरेंट नर्व फाइबर बा सेंसरी नर्व फाइबर मान ओके whereas जो इफरेंट नर्व फाइबर्स अछंदी जतले इंफॉर्मेशन हमर गला सीएनएस को सेटा प्रोसेसिंग हला पर किछि गोटे कमांड जनरेट हबो कि किछि मूवमेंट करेवार अछि बा किछि भी सही कमांड ता जो अछि जोटा को रेगुलेटरी इंपल्स को जिवो किछि गोटे बॉडीली फंक्शन को रेगुलेट करिया पे जो इंपल्स जनरेट हबो हमर सेंट्रल नर्वस सिस्टम रे जनरेट हबो सेंट्रल नर्वस सिस्टम रु ट्रांसमिट करे कि अगेन पेरिफेरल टिश्यू बा ऑर्गन बा इफेक्टर को जोटा पहुंचेबे से माने को इफेरेंट नर्व फाइबर को जाए इफेरेंट नर्व माने एनवायरनमेंट रो जो किछि इंपल्स सेठो हमरा डिटेक्ट हेछि बाय द सेंसर्स इंपल्स जनरेट हेछि सेटा को सेंट्रल नर्वस सिस्टम जे हमरा ट्रांसमिट करेबे तब सेंट्रल नर्वस सिस्टम रो जो इफेक्ट किछि गोटे रेगुलेटरी इंपल्स थिबो सेटा टिल द इफेक्टर ऑर्गन हमें इफरेंट फाइबर्स माने ट्रांसमिट करेबे ओके एटा है वाला टू टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स बट ब्रॉडली एबे जो हमरा जेम ह्यूमन न्यूरल सिस्टम ता सीएनएस और पीएनएस रे डिवाइडेड सिमिलरली हमरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ता भी टू पार्ट्स रे डिवाइडेड जोटा को कहा जाय सोमैटिक न्यूरल सिस्टम आ गोटे होछि हमरा ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम ओके तो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रे फंक्शन कोन सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रे फंक्शन होछि सीए सब इंपल्स मानो को रिले करिवो फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द स्केलेटल मसल्स ओके तो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम कौन करिवो सी स्केलेटल मसल्स रो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल्स वाइस वर्सा इंपल्स मानन को ट्रांसमिट करेबो ओके whereas हमर जो ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम अछि ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम कौन करिवो ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम हमरा इंपल्स मानन को ट्रांसमिशन करेबो फ्रॉम सीएनएस टू द इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन्स एंड स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन्स मानन को ही विसरल organs को आ जाए ओके involuntary organs are also known as visceral organs तो peripheral nervous system two parts somatic nervous system और autonomic nervous system somatic nervous system जो अच्छे CNS रू skeletal muscles मन को impulse conduct करेबो whereas जो autonomic nervous system अच्छे autonomic nervous system टा from CNS to involuntary organs and smooth muscles मन को impulse transmission करेबो ओके तो autonomic neural system further हमें दीटा पार्ट रे क्लासिफाई करि परिबा sympathetic neural system
and parasympathetic neural system. तो एटा टिके ट्रिकी क्वेश्चन अछि कि फंक्शन ऑफ आवर विसरल ऑर्गन्स माने फंक्शन को किए कंट्रोल करछि. एटा जस्ट हमें पढ़ले कि विसरल ऑर्गन्स बा इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन्स माने फंक्शन को ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल. समझ हमरा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम नाही तो जल्दबाजी रे किछि पिला माने नन ऑफ द एबव मार देबे, बट एठी हमरा आंसर रॉन्ग हे जिवो. अब नीट रो एमसीक्यू माने -1 मार्क हे जिवो हमरा -1 हमें 5 मार्क्स लूज कर जिबा. एटा भलो जिंस नाही. तो टिके क्लैरिटी सहित भलसे पढ़िबा कि अगेन एठी क्लियरली लिखा है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम अगेन दीटा पार्ट रे डिवाइड हेची. सेटा होची हमर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. तो हमर आंसर हे जिवो फंक्शन ऑफ द विसरल ऑर्गन्स किए कंट्रोल करे सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. ओके होला आंसर मिलेगा हमको. ओके both sympathetic and parasympathetic nervous system माने कंट्रोल करंती फंक्शन. नेक्स्ट, which of the following is not involved in a knee jerk reflex? knee jerk reflex रे ए भितर कोटा इन्वॉल्व हुए नाही. देखो knee jerk reflex होची हमरो रिफ्लेक्स आर्क अंडर रे आसीबो. ओके knee jerk reflex is a reflex arc. तो एटा देखो लिखा है you should carefully study the figure 221.5 to understand the mechanism of knee jerk reflex. तो ए रिफ्लेक्स आर्क जोटा हम स्टडी करछे सेटा होछि हमरा एग्जांपल और ऑफ नी जर्क रिफ्लेक्स. सेटा होछि हमरा गोटे नी जर्क रिफ्लेक्स रो मेकानिज्म टा डिपिक्ट कराइ छै एठी. तो एटा होछि हमरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और मेकानिज्म ऑफ नी जर्क रिफ्लेक्स. ओके तो कोन कोन होछि हमहु से पचारछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्वड इन द नी जर्क रिफ्लेक्स. तो हमरा बेसिक जिंस हमें जोड़ा जानि छे कि को भी रिफ्लेक्स आर्क रे ब्रेन रो इन्वॉल्वमेंट न थाए. देखो क्लियर लिखा छै द रिफ्लेक्स पाथवे कंप्राइजेस ऑफ एटलीस्ट वन एफरेंट न्यूरॉन. गोटे एफरेंट न्यूरॉन एटलीस्ट रहबा दरकार. एटलीस्ट वन एफरेंट न्यूरॉन गोटे रिसेप्टर रहबा दरकार. वन इफरेंट न्यूरॉन रहबा दरकार. गोटे इफेक्टर बा एक्साइटर रहबा दरकार. एंड अप्रोक्सीमेटली व्हिच आर अरेंज्ड इन अ सीरीज. आउ एफरेंट न्यूरॉन जो अछि सेटा हमर सिग्नल रिसीव करिवो फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन और द रिसेप्टर और सेटा को ट्रांसमिट करिवो वाया द डोर्सल नर्व रूट इनटू द सीएनएस. से ट्रांसमिट करिवो. और इट मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जोटा अछि सेटा अछि एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. वेरी वेरी इंपोर्टेंट एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. तो ए जो इंपल्सेस माने अछि माने ब्रेन को जिबे ही नाही. माने हमरा रिसेप्टर देखो एटा होछि हमर रिसेप्टर. एटा हमरा मसल स्पिंडल रिसेप्टर बडे एक्ट करे. रिसेप्टर रो एफरेंट पाथवे रे एफरेंट न्यूरॉन कैरी करला इंपल्स डोर्सल रूट गैंग्लियन थ्रू रे इनटू द स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड रो ग्रे मैटर रे एटा हमर इंटर न्यूरॉन बाय रिले न्यूरॉन प्रेजेंट अछि जे इंपल्स टा रिले करला टू द मोटर न्यूरॉन. मोटर न्यूरॉन वेंट्रल रूट गैंग्लियन थ्रू हमर इफरेंट पाथवे रे कैरी करी की इफेक्टर इंपल्स बा रेगुलेटरी इंपल्स को मोटर एंड प्लेट रे रिलीज करला. मोटर एंड प्लेट होछि हमर इफेक्टर. तो देखो एटा हमर गोटे रिफ्लेक्स आर्क लागी नै. हमर गोटे रिसेप्टर प्रेजेंट अछि, गोटे इफेक्टर प्रेजेंट अछि, गोटे एफरेंट न्यूरॉन प्रेजेंट अछि, गोटे इफरेंट न्यूरॉन प्रेजेंट अछि. आ हमर इंटर न्यूरॉन इधर प्रेजेंट रही पारे न रही पारे से डिपेंड करे. सही टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस पुनी बहुत टाइप रो थाए. से गुडी हमें फर्दर हायर क्लासेस रे तम माने पढिबो. ओके तो इंटर न्यूरॉन रो फंक्शन होची सिंपली रिले करिवो. सेति में सेटा को रिले न्यूरॉन भी समटाइम्स कहा जाए. से सिंपली रिले करिवो इंपल्स टा को फ्रॉम द सेंसरी न्यूरॉन टू द मोटर न्यूरॉन. ओके एटा हमर कोठे होची एटा हमर स्पाइनल कॉर्ड रो ग्रे मैटर रे होची. तो एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एटा होची हमर बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट. ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्वड इन द रिफ्लेक्स आर्क. ओके वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट एटा हमर सिंपली हमरो एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ये आर्क टा कंप्लीट जाय. तो देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्वड इन अ नी जर्क रिफ्लेक्स. नी जर्क रिफ्लेक्स रे कोटा हमरो इन्वॉल्व इन है. तो ततो किछि गोटे स्टिमुलस दिया जाय सडनली हमरो गोटे रेस्पॉन्स आसे सेटा को कोआ जाय हमरो रिफ्लेक्स. ओके और सेटा हमरो जनरली इनवॉल्युंटरीली हे जाय. ओके इनवॉल्युंटरीली हे जाय because you must have experienced a sudden withdrawal of a body part which comes in contact with objects that are extremely hot, cold, pointed, or animals that are scary or poisonous. तो suddenly जदि हम सामने गोटे स्नेक आसीगला तो हमें suddenly चौंक जीवा बा पछु दौड़िबा स्टार्ट कर देबा. आउ suddenly जदि हम किछि गोटे बहुत गरम जिंस धर देले तो इमिडिएटली हम हाथटा पछु आसीबो. तो ए सब हमरो रिफ्लेक्स जगो होय हला. ए सब को ही कुआ जाय रिफ्लेक्स. एई जे हमर एंटायर प्रोसेस अछि
जोटा इनवॉल्यूंटरीली हुए दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ रेस्पॉन्स टू अ पेरिफेरल नर्वस पेरिफेरल नर्वस नर्व्स मानकर स्टिमुलेशन जगु जो ए एंटायर प्रोसेस ऑफ रेस्पॉन्स जनरेट हुए जोटा इनवॉल्यूंटरीली हुए एटा होचे मेन हमरो सबुटो इंपोर्टेंट पॉइंट होची इनवॉल्यूंटरीली हुए आउ एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड हुए ओके एटा वॉल्यूंटरी कंट्रोल अंडर रे नाही एटा आपे आपे हे जाय so involuntarily habo ei response ta due to a peripheral nervous stimulation without conscious effort and requires the involvement of a part of a nervous system requires the involvement of a part of a nervous system central nervous system okay central nervous system ro gote part ro involvement darkar ethi seta hochi amaro spinal cord eta ko je reflex action तो सडनली ये जो मूवमेंट हुए सेठी हमारा नी जक रिफ्लेक्स रे रिसेप्टर ऑब्वियसली हमारा मसल स्पिंडल तो मसल स्पिंडल तो इन्वॉल्वड अछि मोटर न्यूरॉन भी ऑब्वियसली इन्वॉल्वड अछि और रिफ्लेक्सिव फॉर्म और इंटर न्यूरॉन में प्रेजेंट अछि तो ये इन्वॉल्वड नहीं ब्रेन इन्वॉल्वड नहीं ओके नेक्स्ट an area in the brain which is associated with strong emotions मानको सहित brain रो को area involved है which part of the brain is involved with emotions okay emotions मानको सहित brain रो को area involved है सेटा थोड़ा देखियो clearly लिखा है कि inner parts of the cerebral hemisphere and a group of associated deep structures like amygdala hippocampus form a complex structure called limbic lobe or limbic system along with the hypothalamus it is involved in the regulation of sexual behavior and expression of emotional reactions answer मिलिगला हमको तो कौन कुछ से हमर cerebral hemisphere रो जो inner parts माने अछि cerebral hemisphere रो inner parts along with किछि associated deep structures for example amygdala और hippocampus मिसिकी गोटे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करती जाको लिम्बिक लोब बा लिम्बिक सिस्टम कहले तो लिम्बिक लोब रो कोन कोन कंपोनेंट्स गोटे होची इनर पार्ट्स ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर आ होची एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर जेमति कि एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस तो ए जो लिम्बिक सिस्टम अछि सी पुनी अलोंग विथ हाइपोथैलेमस इन्वॉल्वड हुए कोथिरे रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर और इमोशनल रिएक्शंस जत्ते सब हमर इमोशनल रिएक्शंस अछि से सब रेगुलेट करियो लिम्बिक सिस्टम अलोंग विथ हाइपोथैलेमस इन्वॉल्वड है जेमिति कि एक्साइटमेंट हे पारे प्लेजर हे पारे रेज हे पारे फियर हे पारे मोटिवेशन हे पारे को भी इमोशन गुडी को हमर रेगुलेट होय बाय द लिम्बिक सिस्टम तो एरिया इन द ब्रेन रे गोटे एमिति एरिया प्रेजेंट अछि व्हिच इज एसोसिएटेड विथ स्ट्रांग इमोशंस हमर लिम्बिक सिस्टम हला थैलेमस हमर सब इमोशंस को कंट्रोल करे तो एरिया को एरिया हमर ब्रेन रे इमोशंस मन से एसोसिएटेड आंसर लिम्बिक सिस्टम मार्क द विटामिन प्रेजेंट इन रोडोप्सिन रोडोप्सिन माने एटा हमर गोटे पिगमेंट जोटा हमर रेटिना रे प्रेजेंट अछि रेटिना रे रॉड सेल्स मन करे प्रेजेंट अछि ओके लिखा है the rods contain a purplish red protein called rhodopsin or visual purple which contains a derivative of vitamin A हमको एटी क्लियरली आंसर मिल गला ओके रॉड सेल्स माने अछन ओके हमर रेटिना रे किछि फोटो रिसेप्टर सेल्स थांदी एटा हम जान छे रेटिना जो थाए इनर लेयर ऑफ रेटिना सेठी हमर 3 लेयर्स ऑफ न्यूरल सेल्स माने प्रेजेंट थांती फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड सबडू भीतर हमर गैंग्लियल सेल्स थांती ता बाहर हमर बाइपोलर सेल्स थांती और ता बाहर फोटो रिसेप्टर सेल्स थांती फोटो रिसेप्टर सेल्स टू टाइप्स रो थांती रॉड सेल्स और कोन सेल्स से भितरु जो रॉड सेल्स थांती समानक पाखरे गोटे पर्पलिश रेड कलर रो प्रोटीन थाए सेटा को रोडोप्सिन बा विजुअल पर्पल को आ जाए और रोडोप्सिन जा पड़ला सेटा को हमरा रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड हमें कहि परिबा बुझा पड़ला तो हमर जो रेटिना अछि इनर लेयर ऑफ द रेटिना रेटिना रो जो इनर लेयर अछि रेटिना रो इनर लेयर केतेटा लेयर ऑफ सेल्स द्वारा तयारी अछि रेटिना रो जो इनर लेयर अछि सॉरी इनर लेयर ही हमर रेटिना ओके आखिर हमर तीनटा लेयर अछि ओके स्क्लेरा कोरोइड बाहर एक्सटर्नल मोस्ट लेयर अछि हमर स्क्लेरा ओके तापर आसे हमर कोरोइड मिडिल लेयर इनर मोस्ट लेयर जो अछि सेडा अछि हमर रेटिना तो इनर मोस्ट लेयर जो अछि हमर आई रे हमर तीनटा लेयर फर्स्ट लेयर इज नोन एज स्क्लेरा सेकंड लेयर इज नोन एज कोरोइड एंड थर्ड लेयर इज नोन एज रेटिना ओके तो इनर मोस्ट लेयर अछि हमर आई लेयर होची रेटिना रेटिना रे अगेन 3 लेयर्स ऑफ न्यूरल सेल्स प्रेजेंट थांदी ओके न्यूरल सेल्स माने तीनटा लेयर रे अरेंज हितांदी फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड माने सबुटु भितरे गैंग्लियन सेल्स लेयर थाए तापरे बाहर आउट के बाइपोलर सेल लेयर थाए
अब सबुठो आउटसाइड आउटर मोस्ट रे फोटो रिसेप्टर सेल्स मानको लेयर थाए फोटो रिसेप्टर सेल्स टू टाइप्स रो रॉड्स एंड कोन्स रॉड्स मानको पाखे गोटे पर्पलिश रेड कलर प्रोटीन रोडोप्सिन थाए रोडोप्सिन रे विटामिन ए रो गोटे डेरिवेटिव थाए तो आंसर हे गला हमरो विटामिन ए नेक्स्ट ह्यूमन आईबॉल कंसिस्ट्स ऑफ 3 layers and it encloses से कोछि कि ह्यूमन आईबॉल रे 3टा लेयर थांती ऑब्वियसली देखो लिखा है द वॉल ऑफ द आईबॉल इज कंपोज्ड ऑफ 3 layers ओके हमर जो ह्यूमन आईबॉल थाए सेटा 3 layers द्वारा कंपोज होता है एक्सटर्नल लेयर इज नोन एज स्क्लेरा द मिडिल लेयर इज नोन एज द कोरोइड एंड द इनर लेयर इज नोन एज रेटिना ओके तो स्क्लेरा कोरोइड एंड रेटिना होसन हमर ह्यूमन आईबॉल वॉल रो 3टा लेयर आ ए ह्यूमन आईबॉल कोन कोन एनक्लोज करे तो एटा हम ऑलरेडी डायग्राम में देखिबा एटा होछ हमर ह्यूमन आईबॉल एंड कोन एनक्लोज कर माने कोन इनसाइड द ह्यूमन आईबॉल प्रेजेंट अछंदी लेंस यस लेंस प्रेजेंट अछि इरिस एंड ऑप्टिक नर्व को कोन ह्यूमन आईबॉल एनक्लोज करूची नाही ऑप्टिक नर्व ह्यूमन आईबॉल रो बाहर प्रेजेंट अछि तो ई ऑप्शन हमरा रॉन्ग हे जो लेंस एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर यस लेंस एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर होछि हमरा राइट आंसर बिकॉज़ इट क्लियरली एटा हमर ह्यूमन आईबॉल एटा हमर एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट अछि ओके एक्वस चैम्बर भितरे एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट अछि एक्वस चैम्बर हमर लेंस और कॉर्निया मझिरे थाए और लेंस और रेटिना मझिरे हमर विट्रियस चैम्बर थाए तो एक्वस ह्यूमर और विट्रस चैम्बर रे विट्रस ह्यूमर थाए एक्वस ह्यूमर थाए तो एक्वस ह्यूमर लेंस और विट्रस ह्यूमर तीन जन जाक हमर ह्यूमन आईबॉल भितर थांती बा एनक्लोज थांती कॉर्निया इज ऑब्वियसली नॉट एनक्लोज्ड बाय द ह्यूमन आईबॉल से बचा ह्यूमन आईबॉल कौन पार्ट्स को एनक्लोज करछ माने कंटेन करि के रखछ कॉर्निया इज itself a part of sclera cornea हमर sclera रो गोटे पार्ट ओके the anterior portion of this layer is known as cornea तो एट क्लियरली लिखा है sclera रो जो anterior portion अछि ओके sclera layer रो anterior portion को ही cornea कहल जाय तो cornea obviously human eyeball भीतर enclose है कि रही तो हमरा आंसर ए दुटा ऑप्शन भी हमरा डिलीट हे जिवो जेमति कि हमरा ऑप्टिक नर्व हमरा आईबॉल पछरे अछि आईबॉल सेटा को एनक्लोज करेनी सिमिलरली हमरा स्क्लेरा रो भी जो एंटीरियर पोर्शन अछि सेटा कॉर्निया तो कॉर्निया को भी आईबॉल एनक्लोज करेनी नेक्स्ट क्वेश्चन wax secreting gland which is present in the ear canal is called ear canal रे किछि wax secreting glands माने थांती से wax secreting glands को कोन कहआ जाय ओके से कुछ ear रे किछि wax secreting glands थांती से तार ना कोन एटा देखो एटा होछि हमरो गोटे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन तो एटा तमे मन रखिबो मु जा कहूची देखो there are very fine hairs and wax secreting glands in the skin of the pinna and the meatus okay NCERT रे जस्ट एतिकी ही लिखा है कि हमर जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल अछि बा ईयर कैनाल ओके एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जे हमर साउंड को कंडक्ट करे फ्रॉम द एनवायरनमेंट पिन्ना कोन करे collection of the sound okay environment रो साउंड को कलेक्ट करे हेल्प करे तापर साउंड ता थ्रू द एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटर्स ट्रांसमिट हुए टिल द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ओके तो ए जो हमरो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल अछि बा पिन्ना तो पिन्ना रो स्किन रे और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो अछि सार स्किन रे किछि wax secreting glands माने प्रेजेंट थांदी जो माने रेस्पोंसिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ईयर wax ओके ईयर wax सिक्रेशन पई माने रेस्पोंसिबल थांदी से wax secreting glands माने हमरो पिन्ना रो स्किन रे प्रेजेंट थांदी एज वेल एज द meatus रे प्रेजेंट थांदी ओके हमरो जो meatus बा कैनाल था से द स्किन रे भी हमरो प्रेजेंट थांदी बिकॉज़ एक्सटर्नल ऑडिटरी meatus को ही हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल कहल जाय तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और पिन्ना रो स्किन रे wax secreting glands और वेरी फाइन हेयर प्रेजेंट थांदी बोले जस्ट गोटे इंफॉर्मेशन दिया जायछि बट एठी से पचाउछि ईयर कैनाल रे जो wax secreting gland माने थांती सेही ग्लैंड माने कोन कहल जाय तो मन रखो आंसर होछि हमारा सेरुमिनस ग्लैंड ओके सेरुमिनस ग्लैंड्स माने सेरुमेन सिक्रेट करंती ओके सेरुमेन इज द टेक्निकल टर्म फॉर ईयर wax ओके मन रहला wax secreting glands जो माने हमरो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल रे प्रेजेंट थांदी से माने कोन सिक्रेट करंती से माने सेरुमेन सिक्रेट करंती सेरुमेन होछि हमरो टेक्निकल टर्म यूज्ड फॉर ईयर wax बिकॉज़ ईयर wax गोटे कॉमन लेमन टर्म तार टेक्निकल टर्म होछि हमरो सेरुमेन ओके आ ग्लैंड्स मानको ना कोन ग्लैंड्स मानको सेरुमिनस ग्लैंड कहै हमें सपोज करो एग्जाम रे क्वेश्चन आसुची और तमे आंसर जानि न तो फिर भी तमे ए क्वेश्चन ता करेक्ट करि परिबो लॉजिक्स रे लगाओ प्रोस्टेट ग्लैंड केबे भी हबो कि नहीं हमें ऑब्वियसली प्रोस्टेट ग्लैंड इज अ मेल एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड ओके सिमिलरली कॉर्पस ग्लैंड भी हबनी कॉर्पस ग्लैंड भी हमर गोटे मेल एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड
स्वेट ग्लैंड हम कि ऑब्वियसली हमनी स्वेट ग्लैंड तो स्वेट प्रोड्यूस करिवो स्वेट ग्लैंड वैक्स केमिति प्रोड्यूस करिवो बुझा पड़ला एज सिंपल एज दैट सपोज फॉर एग्जाम रे क्वेश्चन आसे तमे जानि न लॉजिक लगे कि बाय द मेथड ऑफ डिलीशन तमे आंसर डिड्यूस करि परिबो आराम से वर्क सीक्रेटिंग ग्लैंड जो एयर कैनल रे अछि सेटा को सेरुमिनस ग्लैंड कहै छै ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनल ईयर रो जो पार्ट जोटा हियरिंग पई रेस्पोंसिबल ओके द पार्ट ऑफ द इंटरनल ईयर व्हिच इज रेस्पोंसिबल फॉर हियरिंग इज इंटरनल ईयर रो ओ पार्ट टा हियरिंग पई रेस्पोंसिबल से पचारछि मतलब रखो हमार जो हियरिंग रे जो पार्ट इन्वॉल्व था सेटा होछि हमर कॉक्लिया ओके हियरिंग रे हमर इंटरनल ईयर रे बहुत सारा ऑब्वियसली पार्ट्स अछनी आ जो पार्ट टा हियरिंग रे इन्वॉल्व था सेटा हमर कॉक्लिया मन रहला काहे की कॉक्लिया एटा होछि हमर क्वेश्चन why is it cochlea why isn't it utriculus or sacculus because मन रखो utriculus sacculus semicircular canal ये तीनटा जो अछंदी ये तीनटा हमर पार्ट्स ऑफ द वेस्टिबुलर apparatus मन रहला inner ear located above the cochlea okay तो above the cochlea हमर कोन थाए गोटे वेस्टिबुलर apparatus थाए वेस्टिबुलर apparatus रो फंक्शन कोन वेस्टिबुलर apparatus रो फंक्शन होची मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी बैलेंस मन रहला वेस्टिबुलर apparatus रो फंक्शन कोन वेस्टिबुलर apparatus रो फंक्शन होची मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी बैलेंस बुझा पड़ला वेरी इंपोर्टेंट इनर ईयर रे गोटे कॉम्प्लेक्स सिस्टम थाए जोटा को वेस्टिबुलर apparatus कह जाय और सेटा अबोव द कॉक्लिया प्रेजेंट है मन को सीए पचाउची द पार्ट ऑफ द इंटरनल ईयर बाय इनर ईयर व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर हियरिंग साउंड हियरिंग माने प्रोसेसिंग ऑफ द वाइब्रेशंस जोटा हमर एज ए इंपल्स कंडक्ट हबो से जो साउंड इंपल्सेस जोटा पहुंचबो से साउंड इंपल्सेस को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस रे किए कन्वर्ट करे obviously that is cochlea okay cochlea रा फंक्शन कोन जो साउंड इंपल्सेस हमर प्रोड्यूस हे छी बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रो आसे की टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रे हिट करछि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रो मैलियस इनकस ऑफ स्टेपिस माने सेटा को एम्प्लीफाई करछन से एम्प्लीफाइड साउंड इंपल्सेस को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस रे कन्वर्ट करिवार काम होची cochlea रो तो obviously the part of the internal ear hearing by responsible सी होची हमर cochlea semicircular canal utriculus or sacculus are a part of vestibular apparatus हला देखो it clearly लिखा है कि vestibular apparatus is composed of three semicircular canals and the otolith भितरे हमर macula is the sensory part of saccule and utricle तो it clearly लिखा है कि vestibular apparatus is composed of माने vestibular apparatus रो भितरे तीनटा सेमी सर्कुलर कैनाल थांती माने सेमी सर्कुलर कैनाल हमर वेस्टिबुलर apparatus रो गोटे पार्ट सिमिलरली आ गोटे जिंस स्ट्रक्चर था सेटा को ओटोलिथ को जाय ओटोलिथ रे अगेन दीटा पार्ट थांती सैक्यूल एंड यूट्रिकल तो ए सब जो अछि सैक्यूलस यूट्रिकुलस और सेमी सर्कुलर कैनाल ए सब हमर वेस्टिबुलर apparatus रो पार्ट वेस्टिबुलर apparatus रो फंक्शन होछि मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस ओके बॉडी बैलेंस मेंटेन करबा फंक्शन तो कॉक्लिया इज द राइट आंसर organ of Corti is a structure which is present in organ of Corti कोठे present अछि से कोछि organ of Corti obviously हमरा cochlea भितर present अछि okay the organ of Corti is a structure which is located on the basilar membrane देखो बेसिलर मेम्ब्रेन ऊपर organ of Corti अछि बोली कोछि देखो एटा अछि हमें डायग्राम रो आंसर डिड्यूस करता देखो एटा अछि हमर बेसिलर मेम्ब्रेन ओके एटा अछि हमर बेसिलर मेम्ब्रेन ए बेसिलर मेम्ब्रेन ऊपर ए जो स्ट्रक्चर टा प्रेजेंट अछि ए स्ट्रक्चर रो नाम अछि organ of Corti now a diagram ta kon represent करछि एटा होछि हमर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्शनल व्यू ऑफ कॉक्लिया तो कॉक्लिया रो क्रॉस सेक्शनल व्यू होछि जोटा हमें भी स्टडी करछे तो कॉक्लिया रो क्रॉस सेक्शन रे हमको बेसिलर मेम्ब्रेन देखा जाउछि और बेसिलर मेम्ब्रेन ऊपर ऑर्गन ऑफ कॉटी देखा जाउछि राइट तो ऑब्वियसली ऑर्गन ऑफ कॉटी इज अ स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रेजेंट इन द कॉक्लिया एज सिंपल एज दैट जदी कॉक्लिया रो क्रॉस सेक्शन रे बा सेक्शनल व्यू रे हमको बेसिलर मेम्ब्रेन और organ of Corti देखा जाउछि और लिखा है कि organ of Corti is structure which is located on the basilar membrane so obviously say present inside the cochlea okay as simple as that cochlea with present अछि organ of Corti right next question rearrange the following in the correct order of involvement in electrical impulse movement रो correct order रे arrange करिवा पई कहूछि neuron रो ए parts गुडी को simple question हमें जानी से इलेक्ट्रिकल इंपल्स रो डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन कोटा फ्रॉम द डेंड्राइट टुवर्ड्स द एक्सोनल टर्मिनल ओके फ्रॉम द डेंड्राइट्स टुवर्ड्स द एक्सोन टर्मिनल राइट सिंपल क्वेश्चन देखो से कोछि कि
एई जो पार्ट्स गुडी को लिखा है जो गुडी को एई जो हमर एक्सॉन रो पार्ट्स गुडी को एटा नोट डाउन कराई छी सेई एक्सॉन रो पार्ट्स गुडी को ऑर्डर इन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स मूवमेंट रो करेक्ट ऑर्डर रे अरेंज करिया पई कोची हमें एई गोटे जिंस तो ऑब्वियसली सिंपली जानि जे कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो थाए से फ्रॉम द डेंड्राइट्स टुवर्ड्स द एक्सोनल एंडिंग्स व सिनेप्टिक नर्व ट्रांसमिट हुए ओके ट्रांसमिशन को डायरेक्शन रे हुए तो देखो हमें जान चाहिए कि जो डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन ऑफ इंपल्स होची सेटा फ्रॉम द डेंड्राइट्स टुवर्ड्स द एक्सोनल एंडिंग हुए तो सही डायरेक्शन रे हमको जस्ट आंसर टा लिखियार अछि अरेंज करिवार अछि इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन द इलेक्ट्रिकल इंपल्स मूवमेंट तो सबुटु फर्स्ट कोड आसीओ देखो सबुटु फर्स्ट ऑब्वियसली हमरो डेंड्राइट्स आसीओ ओके तो फर्स्ट हमरो डेंड्राइट्स को हमें 1 देबा डेंड्राइट्स पर देखो सबुटु फर्स्ट हमरो ऑब्वियसली डेंड्राइट्स असला ए डायरेक्शन रे हमको रिड्यूस करिया ए डायरेक्शन फ्रॉम अप टू डाउन फर्स्ट हमरो डेंड्राइट्स असला सेकंडली कौन आसीओ सेकंड रे हमरो ऑब्वियसली सेल बॉडी आसीओ सेल बॉडी ओके तो फर्स्ट डेंड्राइट्स असला 1 रे सेकंड रे हमरो सेल बॉडी आसीला नेक्स्ट होची हमरो एक्सॉन ओके थर्ड रे हमरो एक्सॉन आसीओ फोर्थ रे हमरो एक्सॉन टर्मिनल आसीओ ओके फोर्थ रे हमरो एक्सॉन टर्मिनल आसीओ फिफ्थ रे हमरो सिनेप्टिक नर्व आसीओ फिफ्थ रे सिनेप्टिक नर्व आसीओ ओके क्लियर है आंसर बहुत इजी डेंड्राइट्स रो सेल बॉडी रो एक्सॉन एक्सॉन रो एक्सॉन टर्मिनल रो सिनेप्टिक नर्व ए सब हमरो होची डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन राइट नेक्स्ट होची हमरो कमेंट अपॉन द रोल ऑफ ईयर इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड पोस्चर ओके से होची कि हमरो बैलेंस ऑफ बॉडी ओके बॉडी बैलेंस ऑफ पोस्चर मेंटेन करिवारे कौन रोल अच्छी से विषय लिखिया पई बा कमेंट करिया पई कोची ओके व्हाट इज द रोल ऑफ ईयर इन मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस फाइन व्हाट इज द रोल ऑफ ईयर इन मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस एटा से हां छी बॉडी बैलेंस और पोस्चर मेंटेन करिवारे ईयर का कौन रोल अछि ऑब्वियसली हम जानछे वेस्टिबुलर apparatus जोटा हम ईयर विथ रिप्रेजेंट है तार फंक्शन अछि मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस ओके तो ये आंसर लिखि एठी लिखा ओके क्वेश्चन नंबर 2 रो आंसर देखो वेस्टिबुलर apparatus which is present in the internal ear यार दीटा पार्ट अछि गोटे होछि हमर सेमी सर्कुलर कैनल्स आ गोटे होछि हमर ओटोलिथ ऑर्गन ओके so there are three planes to the semicircular canals okay मन रखो semicircular canals are oriented in three planes perpendicular to each other okay semicircular canals में तीनटा different plane रे obviously oriented अछि गोटे xy गोटे yz plane आ गोटे हमरो xy plane yz plane और xz plane okay सही तीनटा plane रे oriented अछंदी और perpendicular to each other the relative orientation of these canals sends message to the brain and keeps the body balanced and in good posture okay तो एई जो तीनटा कैनल रो रिलेटिव ओरिएंटेशन ओके the relative orientation of these canals sends message to brain and keeps body balanced and in good posture okay बुझे पड़ला तो ये जो तीनटा सेमी सर्कुलर कैनल अछि तीनटा सेमी सर्कुलर कैनल रो जो रिलेटिव ओरिएंटेशन थाए से रिलेटिव ओरिएंटेशन टा ब्रेन को मैसेज सेंड करे और सही मैसेज द्वारा बॉडी हमर बैलेंस्ड और गुड पोस्चर रे रहे नेक्स्ट which cells of the retina enable us to see colored objects around so बोलते हैं कि रेटिना रे हमरा ऑब्वियसली डेटा टाइप रे सेल्स प्रेजेंट थांदी इनर लेयर इज रेटिना ओके इनर लेयर हमर जो अछि सेटा होछि हमर रेटिना ऑलरेडी पढ़ी सारछे हमर आईबॉल रो वॉल रे तीनटा लेयर थाए स्क्लेरा कोरोइड और रेटिना रेटिना रे थ्री लेयर्स ऑफ न्यूरल सेल्स प्रेजेंट थांदी गैंग्लियन सेल्स बाइपोलर सेल्स और फोटोरिसेप्टर सेल्स फोटोरिसेप्टर सेल्स अगेन टू टाइप्स रो rods और cones okay these cells contain light sensitive proteins known as photopigments ये जो photosensitive cells माने थांती सेमानकर
किछ माने किछ लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स कंटेन करंदी जोटा को फोटो पिगमेंट कहा जाए। ये कुछ कि रेटिना रो को सेल्स माने हमको कलर्ड ऑब्जेक्ट देखिया पे हेल्प करंदी। कलर्ड ऑब्जेक्ट माने ऑब्वियसली को सेल्स माने रेस्पोंसिबल फॉर कलर विजन सेटा से क्वेश्चन पचारछो कि क्वेश्चन बेसिकली सिंपली कोन पचारछि क्वेश्चन पचारछि रेटिना रे को सेल्स माने हमर कलर विजन बा कलर्ड ऑब्जेक्ट्स माने को देखिया पे एनेबल करंती हमको सेटा होछि हमर क्वेश्चन। तो इट सिंपली हमर गोटे स्टेटमेंट दिया जायछि daylight vision by photopic vision and color vision are the function of कि daylight vision और color vision जे देखिया पे विजुअल एक्विटी पे हेल्प करे daylight बा photopic vision पे और color vision पे कौन से रेस्पोंसिबल whereas twilight बा scotopic vision पे हमरो rods माने रेस्पोंसिबल। ओके तो color vision पे के रेस्पोंसिबल कौन सा रेस्पोंसिबल तो which cells in the retina। ओके रेटिना रे को सेल्स माने कलर्ड ऑब्जेक्ट्स को देखिया पे हमको एनेबल करंदी आंसर है जीवा हमरो कोन सेल्स मन रहला which cells of the retina enable us to see colored objects। आंसर कोन हो को सेल्स अछंदी हमर रेटिना रे जो माने कलर्ड ऑब्जेक्ट्स देखिया पे। नेक्स्ट ए क्वेश्चन डाय करदवा वेयर इज द हंगर सेंटर लोकेटेड इन द ह्यूमन ब्रेन। बहुत सिंपल आंसर हम ह्यूमन ब्रेन रे हंगर सेंटर माने जी जो एक्टिवेट कले हमको भोक लागिवो सी हंगर सेंटर ता हमर कोड प्रेजेंट देखो इट क्लियरली लिखा है द हाइपोथैलेमस कंटेन्स अ नंबर ऑफ सेंटर्स व्हिच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ओके तो हंगर सेंटर थर्स्ट सेंटर आउ हमर जो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करे से सब सेंटर हमर हाइपोथैलेमस रे थाए। तो हाइपोथैलेमस रो फंक्शन होची हमर हंगर सेंटर हाइपोथैलेमस रे अछि माने हमर भोक लागिला कि सैटिस्फाइटी हला सेटा हमर हाइपोथैलेमस मैनेज करिवो। थर्स्ट सेंटर हमको शोष लागिवो जतले थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट हो इन द हाइपोथैलेमस। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन गोटे बहुत मेन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस होची हमर बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। ओके बॉडी टेम्परेचर रो कंट्रोल और बॉडी टेम्परेचर रो रेगुलेशन होची हमर वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस। बुझा पड़ला हाइपोथैलेमस कंटेन्स अ नंबर ऑफ सेंटर्स जोटा हमर बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करे अर्ज फॉर ईटिंग और अर्ज फॉर ड्रिंकिंग को कंट्रोल करे। बुझा पड़ला तो आंसर है जीवा हमरो हंगर सेंटर। वेयर इज द हंगर सेंटर लोकेटेड इन ह्यूमन ब्रेन। आंसर होची हमरो हाइपोथैलेमस। ओके क्लियर बुझा पड़ला क्वेश्चन कोन हंगर सेंटर हम ह्यूमन ब्रेन रे कोठे लोकेटेड अछि एटा क्लियरली लिखा है कि द हाइपोथैलेमस कंटेन्स अ नंबर ऑफ सेंटर जोटा हमर बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करिया पे सेपरेट सेंटर अछि। अर्ज फॉर ईटिंग को ही तो हमें हंगर कहबा राइट अर्ज फॉर ईटिंग कोई हंगर कहबा हमको भोक होची और ड्रिंकिंग ए तीनटा जगह जिंस को हमर कंट्रोल करे हाइपोथैलेमस। ओके तो हम आशा करछि कि आज जति क्वेश्चन हमें डिस्कस करले किछिटा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और बहुत सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करले ता सहित बहुत सारा एनसीईआरटी रो कांसेप्ट हमें रिवाइज करले। तो जहाँ जहाँ आज डिस्कशन ला से सब तुमको क्लियरली बुझा पड़ला मैं आशा करछि नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन रे हम एटू कंटिन्यू करबा विथ शॉर्ट और लॉन्ग आंसर से। ओके थैंक यू।